Yep. So very good evening to everyone and welcome to this platform of learning of Guruji Ke Saath Guruvar. Today is the 89th lecture and I'm Dr. Manisha Soni, your host for today evening. And as always, it's a very, it's a great pleasure to introduce the speaker. He is none other than Dr. Liyakat Namole from Nasik. He is my brother, my friend, a guide, always there to, help you out in any situation. And in fact, he is the one who has got me connected to Mind Method. So to tell you something about, Dr. Liyakat, so he has more than 27 years of passionate practice of homeopathy. He's got a huge experience. He has conducted more than 300 seminars. It's all across India in big cities. He's conducted more than 200 webinars. He is also the pioneer of this group that is Ignited Minds by PHF, where I think almost more than 2,000 doctors, we are all learning on a daily basis. And his motto is, to reach out to doctors in smaller towns where they really want to learn from teachers from big cities. And another motto is to convert 10,000 GPs to practicing homeopathy, out of which I think more than 1,000 GPs are already, started practicing. And he is the author of the book Humanopathy. Till now, more than 10,000 copies have been sold. He is also the master of gestures, which I think all of us know. And all of us have really, we have really, really cashed onto the gestures that we learn from Dr. Liyakat. I think, nobody can, beat him in that. It's absolutely fantastic. He has an upcoming seminar in Bangalore. So the Bangalore students and the doctors are very lucky to hear from him. And also, something which I really want to mention over here is that his teaching is so simplified, so because of his versatile nature, that everyone who is even a student who's day one in homeopathy or has many years of experience can really connect and understand and learn. That's why his teaching is so wonderful. And the topic that Sir is taking, that is New Age polychrests, where we have very less literature to get, and then to learn from his experience is something which is, which we are all very fortunate to learn on this platform. So let's, make it, let's understand that it is an important topic. Let's keep ourselves muted throughout the session so that we can hear him out properly and later ask our questions. So now over to Dr. Liyakat. But before that, let's unmute and welcome Sir with a big round of applause. Over to you, Liyakat, and welcome. Thank you so Welcome, much. sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Thank you. Always been always such a profuse introduction. Thank you, Nisha. I love you. This comes from a darling sister always and a best friend. Thank you. I don't know if I really have done so much. So I feel like I don't have much to do. Anyway, let's start. Because I already wasted 10 minutes of yours. It's 15 minutes. It's not going to be a long session like before. I'm going to share some one or two cases. Very useful remedy. The of late that this remedy, since I've explored this remedy, some 2 years back I've explored this remedy. 2 or 3 years back I explored this remedy. I came across a lady who is a lawyer. Okay, these are similar cases. So I'm going to quote 3 cases and then you will come to know the remedy. It's not very difficult to understand. But the application of the remedy is so nice that you're going to use it in day-to-day practice. Mind you, I'll tell you, by the time I come next month, like at least 50 of you will tell me that you all have met with such a case. Okay, that is my promise. All right, or maybe most of you must have used this also, if homeopathy is fortunate enough. Anyways, now I met with a lady who's a lawyer. Okay, her husband is also a lawyer. Her she's with me for, she used to come to me for infertility. She wanted a male child. She has a daughter. Okay,
What happened after that? She took a chance. She did some Ayurvedic treatment for a male child, and unfortunately, the child died in womb before delivery, like 4 5 days before delivery. It was a stillbirth. Okay, so that was a big shock to her. After that, she's been trying. For almost 3 years, she tried. Okay, she did IUI also. After that, she stopped doing the treatment because it did not help and it was affecting her body. She said, "Doctor, it has affected me so much. I'm not able to gain weight after that. I get pain in here." And she had mild hypothyroidism also. She was on thyroxine 25.25. Okay, and she had stopped the treatment, thinking that now the treatment is affecting her a lot. And husband was also cribbing about how much money he's spending on her and on the treatment. And even the grandmother, even her mother-in-law was also cribbing a lot. "ये कितना पैसा डालती है, so much money." She's a upper caste Maharashtrian lady. So Sasu was also like, "How much money we are spending on you in this? So much money we would have spent somewhere else. You would have spent this on the child's welfare or something." But this lady is like, she comes to me very religiously. She comes to me, comes up very decked up, very affectionate lady, very lively, very talkative. Very, very talkative lady, very lively and fantastic, very jovial lady. She would bring me nice dishes and all. Every time she would come to me. But she would be so much like, "Doctor, I don't mix up with people so much. I do not mix up even with my society members. We mix up only for the sake of, because her husband is a chairman in the society. So she is like socializing. That is why she mixes up. Otherwise, she says, "Okay, I don't talk to them more. I am such." And she is really beautiful. Yeah, she looks beautiful. So she says, "I always get compliment from people that I'm so beautiful. So because of that also, I don't meet. So the ladies in the society, they have complex about me. They talk things about me. So I don't mix up. But whenever I go out, I get lots of compliments. So whenever I go in the parties along with my husband, I get lots of compliments, and most of the guys, they surround me and they talk very nice about me. They tell me how much I don't look that old and all. So she's like, very much me is what I understood from her. Second thing is, she's not able to conceive. This is what I understood. Third, that she felt that the medicines are affecting her. Okay. And fourth thing is, the husband is telling, though the husband tells it with in a jovial manner, but then he says it repeatedly. Even in the clinic, I heard him saying 2 3 times, "हाँ ना डॉक्टर, so much I spent on her. उतना तो एफडी कर देता, उतना प्रोविडेंट फंड में डाल देता, उतना शेयर्स में डाल देता." तो like that. So he used to be like that. So I gave the remedy, and then even her co-sister, she's the co-sister is a Ayurvedic doctor. Her brother-in-law is also Ayurvedic doctor, but not practicing in government. Her co-sister, that is her Devrani, is actually a practitioner, Ayurvedic practitioner. Okay, so Devrani has 2 kids already. Okay, and the Devrani in front of her now. The other day she was telling, like, well, I have no problems. I can abort. I can have child. Like that. So these are the 4 points that I understood, and from her personality, that I understood that she's a very jovial lady, very lively lady. Okay, so these are the 5 pivotal points of her case that I understood. Second case I want to share. Okay, I will be reminding you, don't worry. First case, second case, I have written all the cases. Okay, so second case is of a man. Okay, who has who was told that he might have stomach ulcers. Okay, but they did gastroscopy. Nothing was fine. Found only some gastritis, mild gastritis, that every man will have. Every male who's like 35, 40, 45, who's had some pains, or who had smoke, who has a history of smoking, sometimes, or who's a non-veg eater or a spicy eater, naturally will have something or the other, something abnormal. I have not seen 100% normal endoscopy report of any person in my life. 100% normal endoscopy report? No. If you have some pain in stomach, obviously you're going to have, something or the other. Okay.
So they told, like, the general practitioner, the style nowadays. वो बोलते हैं ना कि नहीं, आपको तो एसिडिटी है, आपको अल्सर हो सकता है, ये हो सकता है. तो दिस पुअर मैन वाज टेकिंग antacids and lots of from gastroenterologist, very famous gastroenterologist of Nasik. He was taking lots of enzymes and antacids and so many things. So every time he used to come, doctor, I have pain here. कुछ होगा क्या डॉक्टर? कुछ होगा क्या? कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर? Every time he would come and pain here. Okay, he used to be so anxious and every time he would insist कि डॉक्टर कुछ टेस्ट कराना है क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना डॉक्टर? देखो, हाँ डॉक्टर, आई हैव अ बिग नेम डॉक्टर, मेरा बहुत अच्छा नाम है और मेरी बहुत अच्छी फैमिली है. आई बिलोंग टू वेरी रेपुटेड फैमिली डॉक्टर. I am from a very upper caste. Okay, and eventually this man was also a liar. Okay, that is fortunately. Okay, coincidentally he was also a liar. Okay, and then I used to give him valeriana. I gave him sabadilla. I gave him arsenic also. Once I had given him uh, Viratram also, album also, because of his saying that I belong to a very reputed class and reputed family. So I asked him, what is there any stress or is there any incidents that have happened in your life that has caused you some stress? So he said, doctor, there was a judge in there was a judge in Nasik. So this man does not know English much. So he joked about my English. आजकल लॉयर्स को इंग्लिश भी नहीं आती है. अभी तो ना कि किस तरीके के, लाइक, हम लोग भी देखते हैं कि लोग ब्लीडिंग को ब्लडिंग बुलाते हैं. यू नो तो दैट थिंग अबाउट दैट जो जज वंस joked at him. Okay, so since then he has this problem. So I had given him staphysagri also for this. Okay, but when I went back, you know, and I did the retrospective study, I found this remedy. Okay, third case is of hypothyroid. Okay, now this is a lady, okay, of 43. Okay, this is a lady of 43. Okay, now this lady main complaint was that she gets very dull after eating. Very dull. She feels like sleeping. She does not want to do anything. She's so bloody dissatisfied with everything. She says, डॉक्टर, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है. खाना खाती है तो अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बाद में डलनेस लगता है. ओके, इसलिए मैं कई बार खाने को ना भी बोलती हूँ, मगर खाने को मन होता है. ओके, अगेन लेडी यूज्ड टू कम absolutely decked up, very much stylish, with like brown hair and very पैठनी टाइप ऑफ साड़ी एंड चमचम वाली साड़ी. ब्लाउज भी एकदम वो बड़े नेक वाला ब्लाउज, लॉट्स ऑफ लाइक गोल्ड, एकदम मस्त स्टाइल में आएगी. उसकी पर्स भी ऐसी गोल्डन स्टाइल की, आईफोन. ओके, सो दीज आर द थ्री केसेस. वेरी वेरी सिंपल थ्री केसेस. थर्ड केस में हाइपोथायराइडिज्म वाज डायग्नोज्ड बिकॉज ऑफ दिस सिम्टम्स. ओके, डलनेस, then eating causes dullness and नो डिजायर फॉर एवरीथिंग. उसको कुछ भी चीज अच्छी लगती है, डॉक्टर मैं आज चिड़चिड़ी रहती हूँ, आजकल बहुत चिड़चिड़ करती है और चेहरा मेरा उदास रहता है, मैं हमेशा उदास रहती हूँ. घर वाले बोलते हैं मेरे हस्बैंड मेरे से उगता गए. शी वाज लाइक कि माय हस्बैंड सेज कि तू हमेशा उदास उदास रहती है. मेरे को मेरे बच्चे उदास क्वीन बोलने लगे हैं डॉक्टर साहब. ओके, दिस इज द वर्ड शी सेज. मेरे बच्चे मुझे उदास क्वीन बोलते हैं. और मैं बोला, आपको रहना वहना कैसे पसंद है? तो डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मुझे स्टाइलिश अच्छा लगता है, मुझे ब्रांडेड चीजें अच्छी लगती है. डॉक्टर साहब, मेरा कुछ एक स्टैंडर्ड है, मेरी कुछ एक पर्सनैलिटी है डॉक्टर साहब, मेरा कुछ एक स्टैंडर्ड है, मैं कुछ एक फैमिली से बिलोंग करती है, तो मुझे जो रहना है. एक्चुअली मुझे उसको देख के कई बार कंगना रनौत की याद आती थी, बिकॉज द वे कंगना रनौत आजकल कमेंट्स वगैरह पास करती है ना, तो मुझे उसको देख के कई बार कंगना रनौत की याद आती है, जैसे कर्ली हेयर वगैरह. ओके, from the style, not, she was not very beautiful as Kangana is. She was like pretty,
हाइपोथायराइड वाली कैसी लेडी होगी ना, आप इमेजिन करो 43 में प्री मेनोपॉजल लेडी, लाइक plump and quite quite obese, like 68 something. She was like 5'6" and weight 68 70, but good features. And तो मैं आई आस्क्ड हर, मतलब हाउ इज योर नेचर? डॉक्टर साहब मेरा नेचर बहुत अच्छा है, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे नाचना गाना अच्छा लगता है, मैं पार्टी एनिमल हूँ। लेकिन मैं अपनी स्टैंडर्ड के लोगों के पार्टीज में जाती हूँ, और कहीं जाती भी हूँ तो अपने अपने लेवल के लोग हैं तो मिलती हूँ, नहीं तो फिर मैं अपने अपने इसमें रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है। ठीक है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही मिला। फिर आपका, आप इस तरीके से रहते हो तो किसी का एतराज नहीं होता है? आप कम लोगों में घुलते हो, किसी की मजाल है मेरे से कुछ बोल दे, हर सेंटेंस बस किसी की मजाल है मुझे कुछ बोल दे, मेरे हस्बैंड की मजाल है मुझे कुछ बोल दे। सो दीज आर द थ्री केसेस. These three cases actually will tell about the remedy. Okay, can I have some responses from you? Hello. सर पहली केस तो आपने शेयर की थी। Okay, second थर्ड केस के बारे में बोलो। पहली वाली अलग है, फिर भी ये बापू, दिस इज अनदर केस। वो जो मैं शेयर किया था वो अलग है, दिस इज अनदर केस। तो मुझे सेकंड भी थर्ड केस के सिमिलर बारे लगी वो पहली केस। में, हाँ, सेकंड और थर्ड का बोलो। लेट्स कम टू सेकंड एंड थर्ड। सर सर तीनों भी केस में एक कॉमन लगा मुझे कि उनको लगता है कि हम कुछ अलग है, हम कुछ अपर लेवल के हैं। तीनों को भी ऐसे लगता है बाकी के लोगों से हम कुछ अलग है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसको क्या लोगे फिर आप? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब नमूना ना, लेकिन बेटा एक्सक्लूसिव में समझाए ना कि एक्सक्लूसिव को समझना हो तो नमूना, मतलब हम बोलते हैं ना यार ये नमूना है, मतलब एंटीक, मतलब सबसे अलग, अपनी झलक सबसे अलग। जैसे लोग होते हैं ना कि वो, मैंने एक देखा था, यू नो, एक मेरे पास में एक स्टूडेंट है मेरी, उसने कौन सी टाटा की रिक्शा वाली कार, कौन सी हो, नैनो ली थी, लिमिटेड एडिशन है डॉक्टर साहब, तो इसलिए मैंने वो ली। तो दैट इज एक्सक्लूसिव, समझ रहे हो? मतलब उनकी कार का कलर भी वो ऐसा, वो पैरेट ग्रीन वगैरह। आर यू गेटिंग मी? दैट यू कैन कॉल exclusive because it is exclusive to, please remember, it's not exclusive, it is exclusive to exclusive, मतलब टू होना चाहिए। ये नहीं कि अभी सनरूफ वाली कार इज नॉट, इट कैन बी एक्सक्लूसिव बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू, राइट? हेलो, आर यू गेटिंग मी? जी सर। जी जैसे सर। जैगवार है, मेरे एक दोस्त है उनके पास में जैगवार है, that's not exclusive, right? That's not exclusive to, that is an exclusive car but that's not exclusive to, right? I mean नासिक के अंदर अभी कम से कम 500 जैगवार हो गई हो। ओके, ये तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने तो, आई थिंक इसकी तो थर्ड थी, बट उसका कुछ अलग मतलब नहीं। हाँ, तो बोलो इसको क्या लोगे फिर आप? अगर एक्सक्लूसिव नहीं तो क्या कॉम्पस, है? हाँ, फोर्टी कॉम्पस, प्राइड। क्या बेटा? फोर्टी। कॉम्पस फोर्टी प्राइड। इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट delusion, great person. डिल्यूजन, ग्रेट पर्सन ही इज, ओके। हाँ, ग्रेट के भी और थोड़ा करीब, वेरी ग्रेट पर्सन ही इज ऑल्सो पॉसिबल, मैंने भी लिया था ये रूब्रिक। हाँ, और कोई? Delusion superior he is and others डिल्यूजन ऑफ are सुपीरियरिटी, डिल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी, ओके। Diligent, distinguished he is. डिस्टिंग्विश कैसे लोगे आप बताओ? डिस्टिंग्विश मतलब क्या? सबसे बोलो। अलग, सबसे अलग। फिर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव कैसा रहेगा? डिस्टिंग्विश बोलते ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू, अच्छा। ऐसा बोलते ना अपन, भूल गए? यस। ग्रामर में बोलते थे ना, याद है? यस सर। तो उसको टोटली उसके कैरेक्टरिस्टिक सबसे अलग रहे, है ना? बोलते ना डिस्टिंग्विश कैसा लेते? डॉक्टर साहब आपके लिए केस चैलेंज है ना, ऐसी केस आपने देखी नहीं होगी ना पहले, है ना? यस सर। डॉक्टर साहब मेरे लिए कुछ खास ख्याल दो, मेरी केस बहुत अलग है, उस पर कुछ खास ध्यान दो डॉक्टर साहब, मुझे अपना, मुझे स्पेशल पेशेंट बनाओ, बोलते ना। मेरे यस पास सर। में एक डॉक्टर है पाकिस्तान के, बोले डॉक्टर साहब मुझे आपका स्पेशल शागिर्द बना दो आप। मैं बोला शागिर्द दो स्पेशल, सारे केसेस शेयर कर दो डॉक्टर साहब, मुझे अपना शागिर्द बना दो, स्पेशल शागिर्द बना दो डॉक्टर साहब।
समझे ना? और और कोई? Delusion Sir, superiority diligent of tall. Sir, diligent tall. He is. Tall. So tall will be only to do with the height, na beta? Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. Tall will be only to do with the height, right? Hello? जैसे टॉकिंग जी. टॉल, ऊंची ऊंची, टॉल बोल तो ऊंची ऊंची बातें, है ना? एक था हाँ मेरे जी, हाँ पास, जी, सर. एक मेरे है, इनसे एक पेशेंट था। अब मैं उनके, वो कवि है, काफी अभी हो गए, उनको, उनका वही था कि लोगों के लिए मैं बौना तो नहीं हो सकता ना डॉक्टर साहब। लिटरली ही हैड सेड दैट, आई हैड गिवन हिम सल्फर ऑन दैट। ठीक है, लोगों के लिए बौना तो नहीं हो सकता ना डॉक्टर साहब। तो वो ऊंचे लोग ऊंची पसंद, हेलो, दैट विल बी टॉल। ग्रेट विल बी इन साइज, राइट? साइज, वेट, वॉल्यूम, राइट? पर्सनैलिटी, persona, right? And great will be always in comparison to small. Tall always in comparison to Short. short, right? और Yes. delusion superiority of, sir. illusions of superiority, लेकिन उसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि superior will be always in comparison with inferior। ये क्या बोल रही है कि मेरा अपना एक खानदान है, डिलीजन समझ नोबल। लो ना, ये मेरा अपना बोल रही है। Are you getting me? नोबल, अगेन नोबल के अंदर महान, कि कैसे ना, कि डॉक्टर साहब हम रॉयल फैमिली से आते हैं, हमने देश के लिए बहुत किया है डॉक्टर साहब। मेरे पापा बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, मेरे पापा आर्मी में थे, मेरे पापा फ्रीडम फाइटर थे। आर यू गेटिंग मी? वैनिटी, ओके, बट वैनिटी क्या होता है ना, इन वेन होता है ना बेटा। वैनिटी इज द थिंग दैट गोज इन वेन। ये सेइंग कि वी आर, या वैनिटी इज क्लोज अगेन, या यू आर क्लोज कोर्स, बट अगेन वैनिटी इज लिटिल डिफरेंट। ये अपने आप को समझ रही है, हाँ ईगो इज पॉसिबल, या बट ईगो में क्या होता है ना, ईगो में आप अपने आप को सुपीरियर नहीं समझते हो ना, ईगो में आप अपने आप को कुछ समझते हो, बराबर? यू आर वेरी क्लोज, ऑल दिस rubrics आर वेरी क्लोज। आई हैड ट्रीटेड, माइंड यू, द लास्ट केस, ओके, ये उदास क्वीन वाली जो है ना, इसको मैं डायरेक्टली रेमेडी दिया। इसके पहले दोनों केसेस में मैंने ये रूब्रिक ले लेके प्लैटिना, फॉस्फोरस, विराट्रम, स्टेफिसेग्रिया, ये चीजें दिया। लास्ट केस में आई वेंट डायरेक्टली, alright? I went directly with the last case, the right, the correct remedy, because I had learned from the previous 8-9 cases. I have more than 20 cases of this, more than that. At least one case a month I have this since last 3-4 years. Pre-COVID, I guess, I've been using this remedy. COVID में कम यूज किया, उसके बाद में तो बहुत, very much I use this remedy, 30-100 finished। 1M नहीं मेरे पास में अभी तक, इसका जरूरत भी नहीं पड़ा। देखो एक चीज है, जो आपने ईगो बोला, नोबल बोला, सुपीरियर बोला, टॉल बोला, ग्रेट बोला, है ना, ये सबको अगर मिलाओ, ठीक है, उसके करीब है, कि मैं बोलता ना कि सौतेले भाई बहन, चाचा, अपन बोलते हैं ना, कजिन्स को ढूंढा करो, एक सर, इज इनका इट कजिन वेल्थ? डुबरी है। हाँ बेटा, हेलो वेल्थ बोलिए, ले सकते क्या? डिलीजन क्या वेल्थ. बेटा? वेल्थ ना, वेल्थ, वेल्थ. वेल्थ में आप दिखाओगे ना बेटा कि मेरे पास ये ना गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? वो परफेक्ट डायलॉग है वेल्थ का, है ना? हेलो, यस सर, यस सर. वो जंजीर का डायलॉग याद रखो, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास है बंगला, मेरे क्या है, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, फला फला फला, वो एक एक चीज गिनवाता है ना, वेल्थ गिनवाई जाती है ना आपकी, राइट ना? जी जी सर. प्राइड, ये प्राइड। प्राइड, दिस इज प्राइड। यू फील प्राउड ऑफ what you have. You feel proud of many things that you have. You feel proud of your father. You feel proud of your khandan, right? You feel proud of your money. You feel proud of, um, you know, your achievements, right? Hello. So I wanted a remedy which is proud remedy. Okay. ये प्राउड पर से मैं, ये प्राउड का आप याद रखना, मैं आपको समझाऊंगा मैं प्राउड को कैसे समझता हूँ, ठीक है ना?
उस पर से मैं कौन सी कंडीशंस में ये रेमेडीज देता हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, मुझे याद दिलाना कि प्राउड पर से मैं आपको कुछ उसका मेटाफोरिकली या मेरा अंडरस्टैंडिंग बोलो वो दूँ, ठीक है। अब देखो प्राउड वाली रेमेडीज, आई वेंट टू द रेपर्टरी एंड आई सर्च्ड प्राइड, ओके। तो उसके अंदर मेरे को एक चीज बहुत अच्छी मिली, ठीक है। प्राइड वाली मेरे को बहुत इसके अंदर सिम्टम्स मिले ये रेमेडी में, ओके। आई गेव दिस all these three people I gave gratiola. In first case, as Bapu said, I had checked the case, which was a very similar case. Ailments from pride of others. और क्या रेमेडी है, एक बहुत प्राइड को क्या दिया हुआ है रेपर्टरी के अंदर, हॉटी दिया हुआ है ना। हॉटी वुमन करके एक रूब्रिक है। यू विल नॉट बिलीव देयर इज ओनली वन रेमेडी इन दैट, gratiola. It's Roger Morrison's rubric, so very authentic rubric. Of course, all the rubrics in the repertory are authentic. I don't call myself so great to judge the authors who have contributed to the repertory. Fine. The first case I took the rubric diminished diminished. जैसे I have explained that rubric in my last case on Telegram कि husband उसको ailments from pride of others, जैसे सासू माँ उसको belittle कर रही है, husband belittle कर रहा है। अब ये किसमें लेंगे हम? एक बंदा जो अपने आप को कुछ समझ रहा है, एक बंदे को जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है, एक बंदा जो पैम्पर्ड है और उसको इस तरीके की ट्रीटमेंट, तो मैं कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं ना, हम लोग क्या हो जाते हैं एक रूब्रिक में हम लोग अटक जाते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम पोजीशन लॉस ऑफ। हालांकि पोजीशन लॉस में ग्रेटियोला नहीं है, ठीक है, इसकी पोजीशन नहीं गई है, इसको पोजीशन तो है जो है वो है, लेकिन वहां पर उसको नीचे दिखाया जा रहा है। हम लोग एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्ट में अटक जाते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉडिफिकेशन में अटक जाते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम क्या लेते हैं हम लोग, वुंडेड इसमें अटक जाते हैं, ऑनर वुंडेड में अटक जाते हैं। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल रूब्रिक इन कंप्लीट डायनामिक्स, एलिमेंट्स फ्रॉम प्राइड वुंडेड प्राइड, एलिमेंट्स फ्रॉम वुंडेड प्राइड। ये कंप्लीट डायनामिक्स में एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम वुंडेड प्राइड। देखो बहुत अच्छा रूब्रिक है, मैंने उसको इधर ऐड कर दिया हूँ सिंथेसिस में, एलिमेंट्स फ्रॉम प्राइड इंजर्ड वुंडेड। उसके अंदर ग्रेटियोला 4 मार्क्स में है, और वो भी क्लार्क का रूब्रिक है, क्लार्क का एडिशन है। कंप्लीट डायनामिक्स का आप वो ब्राउजर वर्जन डाउनलोड कर लो, वहां से आप रेमेडी सिंथेसिस में ऐड कर लो। बहुत अच्छा रूब्रिक है प्राइड। देखो प्राइड एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रीवेशन वुंडेड प्राइड, ओके, एंड प्राइड ऑफ अदर्स, ये दो भी है इसमें, एलिमेंट्स फ्रॉम प्राइड ऑफ अदर्स एंड एलिमेंट्स फ्रॉम वुंडेड प्राइड। ये दोनों मतलब आपका प्राइड है, ओके, जो कि जख्मी हो चुका है, इंजर्ड हो चुका है, आपको ऐसा लगता है कि इस पर खरोचे आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके प्राइड को ये लोग कम कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, वुंड कर रहे हैं, इंजर कर रहे हैं, एक, और उसको लगता है कि दूसरा बंदा प्राउड है, ये है इसमें, ठीक है। दूसरी सेकंड केस के अंदर तो देर इज डायरेक्ट रूब्रिक, डलनेस, ईटिंग आफ्टर, ईटिंग रिफ्यूजेस टू ईट। देखो आप ये दो रूब्रिक ले लो, बहुत ब्यूटीफुल है, डलनेस, ईटिंग आफ्टर, ईट, ईटिंग एमुलेट्स, and eating refuses to eat from complete repertory. I mean, from complete dynamics, again you take these three rubrics and you will find beautiful gratiola coming out. Dullness, eating out after, though it is a common symptom of hypothyroidism, but why would this be given in the minder section of the repertory? So I thought let us take like that. Eating refuses to eat, eating ameliorates, okay, and dullness, eating after. You have 2 or 3 remedies they come. One causticum also comes with that. अब मैंने सेकेंड केस में why did I give gratiola?
is because उसको जो डॉक्टर साहब यहाँ कुछ होता तो नहीं, डॉक्टर साहब कुछ हो तो नहीं रहा है ना, एंजाइटी stomach arising from stomach, anxiety in stomach complaints, anxiety with weariness of life, डॉक्टर साहब कुछ मन ही नहीं लगता है, कुछ करने का मन ही नहीं होता है, anxiety in abdomen, anxiety abdomen in, anxiety stomach in pit of stomach, डायरेक्ट रूब्रिक दिया हुआ है, anxiety stomach in pit of stomach, anxiety health about with abdominal complaint, anxiety health about मरोज, मरोज मतलब क्या, चिड़चिड़ा उदास, क्या बोलते थे थर्ड लेडी को, उदास क्वीन, समझ रहे हो? तो एंक्शस है, उदास है और चिड़चिड़ा है, ये कॉम्बिनेशन याद रखो, एंक्शस, हेल्थ अबाउट एंड मरोज, रिमेंबर दिस थिंग, ओके? सो when I'm telling please do not write any messages, it's a request, it disturbs my flow. I understand your feelings, thank you, but please do not write anything, it disturbs. Okay, so anxiety health about with morose, especially if the pain is in the abdomen. Okay, so abdominal pain with morose and with anxiety, और उसके साथ में थोड़ा प्राइड का तड़का ऐड कर दो, आपकी ग्रेटियोला बाहर आई, ठीक है? इतना सिंपल है। एंड आप देखोगे देयर इज अ बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक, cheerful and loquacious. She said I am very jovial, dancing desire for, direct rubric ले लो आप, cheerful and loquacious, there are only 17 odd remedies in that. Cheerful and loquacious, only 17 remedies. कितना ब्यूटीफुल रूब्रिक है, माइंड यू इसके अंदर रेयर रेमेडी क्यूबेबा है और गैम्बोजिया है, ठीक है, जो कि क्लार्क सर का है, अगेन क्यूबेबा भी एलन सर का है। तो ऑल द 17 रेमेडीज, नाउ इफ यू रिमूव Gambogia and Cubeba, Gratiola we used to think very rare remedy, but it's not. Gambogia also I've used. Inshallah, I'll share that case sometimes in life in future. Okay. बाकी सब है इसमें, देखो, cheerful and loquacious, Ethusa, Agaricus, Argentum, Arsenic, China, Crocus, Cubeba, Gambogia, Gratiola, Iodum, Kali iod मतलब दोनों iod है, Lachesis, Natrum Carp, Paris quadrifolia. Again, Paris quadrifolia is also a very proud remedy. Stramonium, tabacum, and veratrum album. So my tip about this remedy is, if you think about stramonium, I mean, if you think about veratrum, if you think about Staphylos aureus, okay, in wounded pride, if it fails, think about this remedy. Or if you are not still satisfied with your selection of the remedy, do read the rubrics of this remedy and give it your second thought at least. Okay, about pride, if you're thinking about palladium and platina very much, do think about this remedy. So whenever I get a case of platina, whenever I get a case of palladium, Staphylos aureus or veratrum, especially if they have issues of pride, issues of wounded honor, issues of insult, issues of mortification, I think about this remedy. Okay, now let's talk about pride. Now, how do I take pride? You know, आपको अगर याद होगा, wound healing में they come something called proud flesh. दांत पर भी अगर एक्सेस, इधर अगर कहीं मसूड़ों पे अगर कुछ क्या कहते हैं उसको, फ्लैश आ जाता है, that is also called as proud flesh. So I always take people, you know, if the lady has, you know, big breasts, you know, if the man has, you know, a big belly, but he's so, you know, it comes like, you know, proud. The lady, she has big breasts and like she flaunts it very much, or she's like, you know, she walks like this, or the man with the dairy walks like, you know, he's like okay with that. तो नहीं डॉक्टर साहब है, चलता है. So I take that as proud flesh. So I really go to the remedies which have this pride thing. Okay, take this in, take you can take this as a pinch of salt for your food. Okay, so proud, so obese, big breast, big bellied, hypothyroid, flatulent people,
They are also very proud. I found flatulent people also I found very proud, especially if they fart anywhere aloud without feeling embarrassed. I take that as pride. Okay, of course, with cervical spondylitis, again, you can think about pride. Okay, so if the insult is unjustified, you give staphysagrina in cervical spondylitis. But if the insult, if the proud is in the both, like staphysagrina is like person who is morally sound, he says कि बड़ा आदमी मैं कैसे बोलूँ ना, बट ये अपने आप को शाना समझ रहा है कि कोई कौन हो गया मेरे को ऐसा बोलता है, जज हुआ तो क्या हो गया बहनी। तो यहाँ पर आप ग्रेटियोला सोचो, जहां पर आपका स्टेफिसाग्रिया प्राइड के वजह से देख के फेल हो रहा है या इनकम्प्लीट क्योर कर रहा है, पार्शियल क्योर कर रहा है, डू गिव अ डोज ऑफ ग्रेटियोला, इनफ्रीक्वेंट रिपीटेशंस। आई टेल यू, मेरे इनफर्टिलिटी के कम से कम 20 केसेस ग्रेटियोला से निकले। हाइपोथायराइड तो डे इन डे आउट आई एम गिविंग हाइपोथायराइड, stomach, especially issues of stomach, where my valeriana and staphysagrina, sabadella is failing, especially because sabadella has issues with stomach, valeriana has issues with hypochondriasis. If these two remedies fail, I give gratiola. Okay, तीनों केस में याद रखो, तीनों भी टकाटक आने वाली थी, दोनों लेडीज आई मीन एकदम टकाटक। तो वो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग वेल्थ में अटक जाते हैं, हम लोग फॉपिश में अटक जाते हैं, हम लोग वैनिटी में अटक जाते हैं, हम लोग प्राइड सोचते ही नहीं है कि इतना 3 4 5 भाई डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप इतना सोना क्यों पहन के जा रहे हो, आप चमचम वाला ब्लाउज क्यों पहन के जा रहे हो, हेलो, आप ट्रांसपेरेंट वाली साड़ी जिसके अंदर से आपका ब्लाउज दिख रहा है ऐसा क्यों जा रहे हो, और आप ऐसे ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले क्यों पहन के जा रहे हैं जहां से आपके इनर क्लोथ दिख रहे हैं, वो भी शाइनी वाले हैं, आप उसको भी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि यार ये किस बात का इसको अभिमान है यार, हेलो, ये मैं सोचता हूँ हमेशा, अगर कोई ऐसे आता है तो भैडी ये सब खत्म होने वाला है यार, ये किस बात पर इतरा रहा है। मैं हमेशा सोचता हूँ कोई भी इस तरीके से आता है ना, तो ये मेरी सोच ये थी यार किस चीज पर इतरा रहा है भाई, सब खत्म होने वाला है, 10 20 साल की बात है, यूं निकल जाएंगे दिन। तो वहां पर मेरे मन में प्राइड आती है। तो जब जब भी कोई आपके पास में ऐसी चीजों को फ्लॉन्ट करे या फिर आके आपके वेटिंग में इस तरीके से ऐसा खड़ा रह जाए, आप वेटिंग का थोड़ा सा खुला रखा करो जहां से आपको नजर आए, तो लोग आते हैं ऐसा बैठते हैं, बाजू में कौन है क्या, इस तरीके से बैठते हैं। तो आई रियली थिंक अबाउट remedies who have this superiority complex or pride in their mind, or those who belittle others, या फिर अपने को भी आकर दबाने की कोशिश करते हैं। कई पेशेंट ऐसे आते हैं ना, ये परसों मैंने एक लेडी को दे दिया था, बोलो डॉक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अबे मेरा 140 किलो का तेरा बैल हस्बैंड है, लेडी 1 किलो वजन बढ़ा तो मेरे पे चढ़ रही है, आई टोल्ड हर दिस वे, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे यार इसको किस बात का प्राइड है, 140 ब्लडी के किलोग्राम योर हस्बैंड इज, मतलब हट जाएगा बेचारा, हम उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम इस तरीके से बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। तो तुमको 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए दे के दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। तो इसमें भी आप लोग ये देखो थोड़ा सा, एक बहुत प्यारा रूब्रिक है ग्रेटियोला में, डिलीरियम फीवर विदाउट, डिलीरियम फीवर विदाउट, कैन यू इमेजिन डिलीरियम विदाउट फीवर, है ना। बुखार जैसे किसी पर पैसे का बुखार बुखार होता है, किसी पर प्यार का बुखार होता है, किसी पर यू नो हुस्न का बुखार होता है, किसी पर इश्क का बुखार होता है ना। पहले इसको किस बात का बुखार है रे, हेलो, इसको किस बात की प्राइड है। देखो बहुत अच्छा रूब्रिक है, डिलीरियम फीवर विदाउट, ओनली 3 रेमेडीज, यू विल नॉट बिलीव, देयर इज अ रेमेडी नेट्रोमूर इन दैट, देयर इज स्ट्रेमोनियम, वी कैन अंडरस्टैंड, स्ट्रेमोनियम को हम लोग सस्ता प्लेटिना बोलते हैं, बट नेट्रोमूर, डिलीरियम फीवर विदाउट, इसकी भी केस बताऊंगा मैं कभी इंशाल्लाह, मुझे याद देना, मेरे प्राइवेट लेक्चर्स में भी जो आते हैं मुझे याद देना, मैं इसकी केस बताऊंगा। डिलीरियम फीवर विदाउट, बहुत प्यारा रूब्रिक है, बहुत ही प्यारा रूब्रिक है, बहुत इंप्रेसिव है। देखो नेर का है ये सिम्टम, क्लार्क का है, ग्रेटियोला स्ट्रेमोनियम एडेड बाय क्लार्क एंड नेट्रोमूर इज द एडिशन ऑफ नेसर। ओके, so I hope I have been able to deliver something. Okay, डॉक्टर साहब कुछ अच्छा नहीं लगता, एवर्जन टू एवरीथिंग, ये याद रखो, कुछ अच्छा नहीं लगता,
एवर्जन टू एवरीथिंग बहुत सादा रूब्रिक है, बहुत बड़ा रूब्रिक है, लेकिन बहुत काम की रूब्रिक है। डॉक्टर साहब कुछ तो है, कुछ है तो नहीं, सीधा एंग्जाइटी डार्क मत ले लो। डॉक्टर साहब कुछ है तो नहीं ना, सीधा लाइट डिजायर और एंग्जाइटी डार्क के कॉम्बिनेशन में जाके अटको मत। ठीक है, हाँ हाँ, माइंड में रूब्रिक रेपर्टरी ढूंढो यार, उतना तो करो अफजल भाई, उतना तो ढूंढो यार, रेपर्टरी में थोड़ा तो करो। ठीक है, किसी चीज में मन नहीं लगता, ये भी एक याद है। और ये मरोज वाला रूब्रिक आप जरूर याद रखो, एंग्जाइटी विथ मरोज। ओके, वेरीनेस वीकनेस, वेरीनेस विद एंग्जाइटी, वीकनेस विद एंग्जाइटी। डॉक्टर साहब फिक्र लगी रहती है आजकल, बहुत कमजोरी होती है। फिक्र कमजोरी टुगेदर, फिक्र और आलस, कुछ करने का मन नहीं करना टुगेदर, अगेन रिमेम्बर ये कॉम्बिनेशन याद रखा करो, जिसको हम लोग पहले कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स कहा है ना। तो एंग्जाइटी विथ वीकनेस, एंग्जाइटी विथ वेरीनेस, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, गुस्सा है ना, बराबर ना। कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन को, लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्शन करना पसंद नहीं आता, इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करते गुस्सा आता, ये सबके फटे में टांग अड़ाएगा, ये सबको अड़ाएगा, लेकिन इससे कोई कर ले तो नहीं जमेगा। ठीक है, वो जो अपन ने अभी लास्ट बिग बॉस के अंदर वो जो बंदा था ना, सेकंड जो आया, क्या नाम था उसके अंदर, ये था देखो, सबके जाके कॉन्ट्राडिक्ट करता था, और उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करो तो चिल्लम चिल्ली चालू कर देता। वो भी आप, वो एक सिम्टम थोड़ा सा याद अभिषेक, रखो। हाँ, अभिषेक जो भी था। ठीक है, सो आई होप दिस इज द ग्रेटियोला। I hope you have understood Gratiola officinalis. Okay. Any questions? I have, ये रोजा खुलना है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, या तो आप YouTube पर भी सवाल डाल सकते हो, ये वीडियो इंशाल्लाह एक 8 दिन में YouTube पर पोस्ट हो जाएंगे, वहां पर भी क्वेश्चन डालो, मैं जरूर आपके सवाल के जवाब दूंगा। निशु, कैन वी वाइंड अप द लेक्चर? एनी क्वेश्चंस? आई कैन टेक 1 or 2 questions. Yeah, Hello, any questions guys? I think it has been explained very nicely, and we all can go back and read Gratiola from the rubrics what Sir has explained. So you've given us a insight that in when you look at closer remedies and the how we look at concomitants, and then like cousin sisters and sauteli when, like how you said. So it is very interesting. So I'm sure all of us have really enjoyed this lecture on Gratiola. Looking forward to hearing more of New Age Polycrest from you. Thank you so much. Hello, 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 Thank sir. you. One thing. Hello, Yeah, sir. tell me. One thing. One of my patient, I remember, she puts a lot of makeup whenever she comes to me. So whenever I just asked once whether you are attending some party or what. She said, no, I am returning from office only. On the way back, I am coming to you. And she had applied each and every, makeup of each and every I know. sort, like I know. I'm fully very. like I'm expert about makeup. I know yeah. all the layers that you put in. Every and so much of layers. I thought she is in a party or what, but she said, no, I'm. This is my daily routine. So, what rubric can we take in that case? See, you can take sensitive to opinion of others. You can take social position concern about. You can take Okay. vanity. You can take popish, or you can take pride again, if possible. And she was a case of goiter only. Oh, my love. Then think about Gratiola. Goiter only, because she said that I stopped the salt in my kitchen, Tata salt, and this happened to me. And see, all the people are looking at me because it was not so much visible. But she said that all the people are looking at me, and this is visible. This goiter is visible in my neck. See, if So it she is, was if she's saying it is visible, then there is a beautiful rubric, delusion naked. delusion naked. जो चीज छुपी है वो दिख रही है ना. हाँ. Because as it is, it was not visible, but she felt that it is visible by people. Then why don't you think about hemorrhagia? Delusion, light, too much light. Delusion? Light, too much light. Light. In the room. अच्छा. Yeah, because हालांकि दिख नहीं रहा है फिर भी उसको लग रहा है ना कि दिख रहा है. तो delusion, light, too much light, fall है ना. वो hemorrhagia भी है उसमें. हाँ, delete light वो है ना. एम्ब्रा में वो होता है दिखता नहीं, फिर भी उनको लगता है कि दिख रहा है, सब मेरी तरफ दिख रहा है. दिख रहा है, सब मेरी तरफ देख रहे हैं. एम्ब्रा जो है ना, माँ के पेट से एम्बेरस पैदा होता है. अच्छा. मतलब उसको छोटी छोटी बात है.
You For can think makeup, about embracing. we can take only that rubric, no? Vanity and foppish. You Okay. can think about embracing in this case. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. May I ask your name, beta? Dr. Chinu Jain. चीनू जैन. अरे वाह माशाल्लाह. Yeah. चलो बढ़िया है. Okay, thank you very much, guys. Thank you, मेरा sir. रोजा खुलने का time हो गया. Thank Thank you. you. It's been a pleasure. Thank you. Thank you. Sorry, I was late for 5 minutes. Otherwise, I wanted to talk a little more. Inshallah, next Okay. lecture. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. God Thank bless. you, sir.